Okay, hello everyone. I hope I am audible and visible. Yes, I'm properly audible and properly visible. Let me. Yes. Yes, I have a proper tech check. Hello, Daksh. Hmm. So everything seems to be fine. Let's start with what we are having. Right. हाँ भाई थोड़ा कमर कसी जाए. राइट. चलो. शुरू करते हैं एक एक करके. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी. सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है. राइट. यस. सो एक तो तुम्हें फ्रंट में ही दिख रही है. हेलो साहिल. सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ सेक्शन. ठीक है. So the most important news when it comes to law entrance test, CLAT and other thing. So first thing was like this SC and EC over deletion of voter. Yes. So यहाँ पे आर्टिकल 326 राइट. यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे. राइट. सो आई थिंक दैट EC is going to be EC in EC is going to be in news in India because in India uh, elections are something which are like occurring on the daily basis. Currently, we are seeing the Maharashtra local body elections. Then we are going to see Assam election. Then we are going to see some other particular and Trump, right? I'm not sure. He is an attention-seeking piece of bad example, right? बाकी तुम मेरी भावनाएं समझ सकते हो. हाँ भाई वो है. This is the first day actually when we are not seeing Donald Trump in the front page. Yes or no? Yes, this is the first day since we started doing our news analysis. This is the first day we're not showing Trump on the front news, like ऊपर वाले headline में Trump आज नहीं है. Right. चलो बात करते हैं. So Supreme Court questions over the election commission's voter deletion because nearly 6.5 crore voters are being deleted in special intensive revision. And जो भी राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट है, इंसिस्टिव पावर है, दैट इज द डिस्कशन पार्ट जो कि अभी चल रहा है. देन सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द Iran protested 2000 plus killed and he says aid is on the way. If you believe his aids are on the way, uh, don't forget about the Ukraine. Huh? Ukraine applied for NATO membership in 2008. And if Iranian people or Venezuelan people or people from Gaza, they are expecting that America is going to some aid, like send some aid, help, and like they are hopeful, they are fools, right? हाँ. Yeah, बिल्कुल. Like there is not just only that Trump is the reason behind the protest in Iran. The Iranians like are having tons of problems. I mean, I don't want to get into the politics, but why Iran, being, I guess, the third largest country in terms of oil, right, is still facing poverty and other thing? The reason behind this is sanctions. So if America and Trump believe that people who are suffering in Iran, right, should not suffer,
then first thing the European nation and America should do is like remove those sanctions so that Iran can do a better trade, and so that he can, the government, the regime can help poor people growing better. राइट सो डोंट टेल मी कि ईरान के किस कंडीशन के पीछे अमेरिका नहीं है, डेफिनेटली अमेरिका है, बट ईरान की अपनी पॉलिसीज भी हैं. When 1979 they had Iranian revolution, they actually the leader Shah was revoked, and Khomeini get into the power. And from them to now, they are majorly focusing on nuclear power, defense technology, but they are not focusing on those particular things जो कि basic needs में है, the way Pakistan did. So yes, ईरान की इस कंडीशन के पीछे अमेरिका एंड वेस्टर्न नेशंस हैं. चलो न्यूज में आते हैं वापस, जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है. ओके, लेट्स नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स. Okay, so the next one is there is a split verdict from the Supreme Court on Section 17A. Yeah, right. Yes, this is about the, what we can say, corruption. You know, so there were like prior sanctions before the prosecuting a public servant. So this was the issue. जिसमें 17A में एक split judgment आया है जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस विश्वनाथ के बीच में, राइट. जिसमें 17A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाता है, एंड 14 आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट करता हुआ बताया जाता है. व्हाइल जस्टिस विश्वनाथ इज सेइंग कि प्रोविजन इज वैलिड, सैंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी, लोकपाल लोक आयोग जो है उनके तरफ से आना चाहिए. So there is this particular important news. Then we get the third most important news जो हमारे फ्रंट पेज में भी है, राइट. The end of 10-minute delivery services. Yes. Remember those particular taglines from Blinkit, Zomato, Swiggy, and Zepto, right? That we are going to give you everything within 10 minutes. And they don't give you like everything in 10 minutes. I have like several times I have faced this. Like 60-70% of the time it is more than 10 minutes. But because of that 10-minute tagline, the pressure gig workers are facing, that is not something जो कि welcoming था. So that is why most probably Union Labor Minister is going to intervene for the gig workers to end this. Right? No, Daksh, this is wrong. This is inhuman. मतलब, remember, like somebody wants to deliver something within 10 minutes and suddenly there is an accident because of rush driving, and who's going to take care of it? So yes, it's good that the labor ministry is thinking about the gig worker safety, the occupational health, reforms accountability, and informal labor right. So this is going to be another good article to discuss. Then there is again Manrega versus BVG Ramji. Yes. So सेंट्रल डायल्यूटेड राइट बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटीज, ऐसा एक एलिगेशन के साथ जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, दे स्टार्टेड हैविंग अ कैंपेन अगेंस्ट इट. देन करूर जो पर्टिकुलर वो था, स्टैम्पीड था, उसमें जो सीबीआई प्रोब है, दैट इज स्टार्टेड. सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर प्रोब टू द सीबीआई मॉनिटरिंग कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो इस केस को वो करेंगे. एंड देन इशू जो है वो प्रॉपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का है, पब्लिक कॉन्फिडेंस का है, बिकॉज विजय थालापति is a big star and recently turned politician as well. So yes, it's going to be a good particular thing to see. They will going to do this thing. They want to exploit thing people. Then a new development in Dharmasthala death case. Yes. So, if you don't know about the Dharmasthala death case, we are going to discuss it in detail, but I'll tell you. There is a place where several people, like there is an allegation from a Dalit person that he's being forced to bury several people on that particular place under the political influence. It was in Karnataka, right? So, he allegedly gave a number, approximate 75 worried people without police consent or
without any authoritarian consent. तो उसके बाद से ये न्यूज़ में था एंड फाइनली दी धर्मशाला जो अननेचुरल डेथ पीआईएल है वो पहुंच चुकी है ऊपर तक. देन वी गॉट Jammu Kashmir police profiling the mosque. So not only mosque, they are collecting the data, personal data of imams, uh, mosque committees, families, madrasas, and some other thing. Jammu Kashmir police is doing that, and the allegation is simple. They are violating Article 21 and 25, that is right to privacy, justice case, Bhutta Swami case, and freedom of religion. तो जम्मू कश्मीर में जो मॉस्क प्रोफाइलिंग हो रही है उस पे भी एक बड़ा न्यूज़ है यहाँ पे. देन भाई साहब अगेन इंडिया चाइना, लाइक इंडिया चाइना रिलेशंस आर लाइक व्हाट वी कैन से, तू भरोसा तो करके देख मैं तोड़ेगा वाला सीन. Yes, that is what India China relation is. I mean India and China, they get into some good particular क्या कहना चाहिए relationship from last 5 6 months, and suddenly like जो Saksham Valley है, Chinese were like कि वो हमारा है, right? And again India China again started having a kind of standoff in LAC. Yeah. So trust building underway, but vigilance is necessary. That is the statement from our army chief. And जो भी पर्टिकुलर चाइनाज एग्रीमेंट है 1963 पाकिस्तान के उसमें शक्शगम वैली के उसमें, सो दैट इज समथिंग जो अभी के टाइम पे न्यूज में है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. देन यूएस ईरान डेवलपमेंट इज देयर एंड देयर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको वैल्यू फ्लावर कहते हैं, राइट? सो क्लाइमेट चेंज एंड लैक ऑफ स्नोफॉल के कारण वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है उत्तराखंड की वैल्यू ऑफ फ्लावर्स में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फॉर द CLAT, राइट? सो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स पे जो प्रॉब्लम है हम उसको डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वन इज सबरीमाला की स्कैम जो चल रहा है नॉट फ्रॉम टुडे, 2023 में है कि अ, किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है एंड दूसरी चीजें. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू discuss. Right. I hope you understand why we are discussing the most important news. Again, we might not be able to discuss all the news, but these are the news that you should not miss reading from your newspaper. Am I correct or am I correct, guys? जल्दी बताओ. I'm looking to the chat box. मैं देखूं कितने लोग सिर्फ सुन रहे हैं और कितने लोग सिर्फ समझ रहे हैं. Come on, everyone. कुछ तो रिएक्शंस आ रहे हैं. गुड, जीनियस गाइस, प्राउड ऑफ यू. चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या व्हाट आर द न्यूज़ेस. सो फीडर में फेस लाइबिलिटीज फॉर डॉग बाइट से सुप्रीम कोर्ट. यस. तो छोटी सी बात करते हैं फिर मेन टॉपिक पे आएंगे. सो देयर आर पीपल हु फीड स्ट्रे डॉग्स नियर बाय देयर हाउसेस. Some of them do that for charity, some of them do that for the like love for animals, and because of that there are specific area जहाँ पे भी वो distribute करते हैं वहाँ पे number of dogs जो है वो increase होते जाते हैं, and that causes like chaos और वहाँ पे dog bites वगैरह होती है. तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी जो भी फीड कर रहे हैं अपने अपने एरियाज में डॉग्स को, राइट, दे माइट फेस कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, लाइबिलिटी इफ समबडी पुट केस अगेंस्ट. तो वो थोड़ा सा मतलब अभी के टाइम पे वो आया. देन ब्लू हैज बीन लिंक्ड टू द विथ ऑफ लाइक लिंक विद द स्ट्रगल्स ऑफ marginalized, the importance of blue color, the चंपारण टू अम्बेडकर. इट्स अ गुड एडिटोरियल, बात करेंगे हम इस पे. चलो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन ईसी ऑन वोटर डिलीशन. सो दैट इज कंटिन्यूअस. Supreme Court of India is examining the Election Commission of India's authority to verify citizenship during SIR. Yes. So there are like opposition who are saying ki this is a kind of not a special intensive revision for the what we can say this election,
but it is a kind of SIR process which is going on. So, citizenship verification process that is going on. So, authority of Election Commission of India to verify citizenship during the SIR of electoral law. That is the question. That is the thing that is in question. The core legal dispute involves whether the EC has power to maintain clean rule, allow effectively to screen the citizenship. So, the Kenna court asked if removal of the rules could bring into the doubt of person's right to remain in India. तो उनका ये कहना है कि अगर किसी का नाम हटा दिया गया है, somebody is being removed from the electoral roll, does this make a doubt for the person to right to remain in India? The Election Commission Council says citizenship and delimitations are cornerstone of the electoral process. And poll body says the voter exclude in this SIR have a right to appeal. So the thing is कि if मेरा नाम हटा दिया जाए SIR से, then if it is going to be into citizenship matter as well कि मैं वहाँ पे रहने लायक हूँ या नहीं हूँ. So they will like they have right to appeal, yeah, right? And SIR is not very perfect, very efficient. Problem ये है. Yeah, uh, because there are Amartya Sen, there are ex-Navy chief, there are some other prominent figures जिनको SIR में जो electoral roll है उनसे exclude किया गया. They have been sent notice to justify. So that is the reason it came into the discussion, है ना? Now question raised by Supreme Court में एक एक करके कहता हूँ. सबसे पहले referral for investigation, yes. Justice Jamalia Bakshi questioned, if an electoral registration officer (ERO) decides to delete a voter based on suspected citizenship could be used by the sender as basis of begin deportation process or investigation of their right to stay in India. यस, सो उनका ये कहना है कि इफ ईआरओ है ना, जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, they made a decision, they decided to delete voters name based on suspected, right? The citizenship could be used by the suspected citizen, whether that can be used by the central government to start the process of deportation and investigation for their stays in India. So यहाँ पे कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंडक्ट इलेक्शन. But if they delete someone from the voter list, then center use it for citizenship. Like this says, this particular voter is suspected under the suspected category. So if it is suspected category, can central government, home ministry, can suspect their citizenship and then can start deporting people from India. So that is the question जो कि आया. Then this is key. This is a kind of premature deletion. Yes, a bench asks if ERO have authority to exclude individuals from rules before the central government has officially stripped their citizenship or declare them non-citizen. उन्होंने पूछा है ERO से कि क्या तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम सस्पेक्टेड बोल के इस तरीके की वो कर सकते हो. एंड जो सिटीजनशिप है उसके लिए भी उन्होंने प्रेजेंटम सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन कमीशन के डिटर्मिनेशन के लिए उसकी बात की. द लास्ट वन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. द बेंच क्वेश्चंस आर्टिकल 326 एंड 324. सो उनका सीधा कहना था कि ईसी's पावर ऑफ superintendent, right? Sorry, superintendents under the Article 324 includes the limited, what we can say, process to flag doubtful cases of authorities. यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं 324 और 326 के अंडर. ओके, सो यहाँ पे बात जो चल रही है वो अलग हो गई है. रीजन बिहाइंड दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट? कि आपने अप्रोक्सीमेट 6.5 करोड़ पीपल को वोटिंग लिस्ट से अब तक हटा दिया है. यस, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपकी लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, दैट इज अबाउट द क्रिएटिंग द नेशनल इलेक्टोरल रोल, नॉट फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. So separation of power हो or the authority हो, all these particular things are being questioned in this particular case. This is going to be a very good case. भैया बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है. Okay, and वोटर रिलेशन प्रोसेस के जो सेफ गार्ड्स हैं
उस पे वापस बात की, if you are deleting the voter, ensure transparency. Yes, make sure if somebody is being deleted and he knows he is the citizen of India, he can have a right to appeal. Yeah, right. Second thing, disclosure of reason. If you are deleting one name from the voter list, you should give specific reason for the deletion, whether that is migration, whether that is duplicate voter, yeah, somebody died. And the last one is the public access of data. The public should have easy access with the epic number at district and booth level so that they can have, and even like at panchayat level, so that they can have to be a कौन कौन नहीं है. Because if this process can become a question over citizenship of any individual, this is going to be a very important process. Now, there are two more things जो कि again फिर से question में आए हैं. The one is verification के standards क्या है? Yes. So, according to Supreme Court, deletion cannot be based on software claim alone. If software is claiming that this person is suspected to be a duplicate voter or suspected to have names on other places, this alone cannot be a standard for deletion of any name. It requires field verification. I mean, think about it. I live in Indore and I belong to some other city in Madhya Pradesh. And there are SIR going on, and some people were there. They talk about this particular person was named here. If he's not living here, that means he is being suspected. राइट यस सो उनका ये कहना है कि जो सॉफ्टवेयर क्लेम है दैट इज नॉट अलोन इज सफिशिएंट वी मस्ट हैव फील्ड वेरिफिकेशन by the booth level officers, that is BLO, and a legal window for the voters response. If I'm not having, like, if I don't get my name in electoral roll, then I should have legal rights and legal window where I can approach and tell court and the authorities that I am Indian citizen, I am Indian voter. Correct? So it's going to be a critical case because it's going to challenge the power of Election Commission of India इन अदर अथॉरिटी सो इसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं हो सकता है उनकी भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात चले सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड केस वो जैसा कि किसी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू बी इन द न्यूज थ्रू आउट द ईयर दक्ष ने कहा था दैट इज आल्सो गोइंग टू बी देयर और आधार एज अ प्रूफ है ना ये इस पे फिर से डिबेट हुई द आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप right? The court allowed it to be used as a document to approach the election commission if a person is wrongly deleted. So उनका फिर कहना है कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसको गलत डिलीट किया गया and he is presenting his Aadhaar card, he is supposed to be in the list, but it is not a verification of citizenship. So ये होगा. हेलो रिश्पर्णा बच्चे, थोड़ा सा टाइम खाया करो, जल्दी उठा करो कदों. चलो, let's move to the next one. Right. Okay, so first thing, 100 children were killed in Gaza since the truce, says United Nations. Gaza is still struggling. No way I see being honorable. But no, they are questioning the correct thing. Yes. Think about it. एक simple example से तुम्हें समझाता हूँ. There is a person who is 16-year-old, right? He may have an Aadhaar card, right? But this cannot allow that person to vote for the country. So उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आएगा, but he can be a citizen, right? Then there is a person who is 19-year-old who has Aadhaar card. उसका particular नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आ सकता है, but it's not compulsory that this person can have a proper citizenship document. So Aadhaar can be the proof of voter list. That is one thing. But Aadhaar alone should not be the basis of revoking someone's citizenship because that is a very, very, very critical matter, right? Citizenship is entirely different thing. Electoral roll is a different thing. हमारे यहाँ there is a like age number which is being fixed. अगर 18 साल के आप नहीं हो तो आप वोट नहीं कर सकते.
right? But less than 18-year-old people can be the citizens of India. Na? Look at you. तुम अभी 12 साल के हो, right? And you are citizen of India, but you cannot vote. Getting my point? तो है, questions हैं. तो उसको सिंपली समझो कि आधार कैन बी अ प्रूफ ऑफ व्हाट वी कैन से कि हाँ भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, एक एड्रेस डला हुआ है, एक मेरे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एंड मेरे बायोमेट्रिक्स आपके पास हैं, मैं यहीं पे रह रहा हूँ, इसी देश में रह रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 15-20 years. आई हैव गिवन डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई माई डेट ऑफ बर्थ, दैट वाज 10th क्लास सर्टिफिकेट, सो आई एम एलिजिबल टू वोट, राइट? बट दैट कैन नॉट डायरेक्टली सेज कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आधार कैन बी मेड इन अ डिफरेंट प्रोसेस एज वेल. तो आधार कैन बी अ डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंट, बट इट इज नॉट सफिशिएंट एनफ. ठीक है. चलो, सो गाजा में भैया 100 बच्चों की जान चली जा चुकी है आफ्टर द ट्रूस, ऐसा यूएन का कहना है. एंड टेक्निकली nobody is talking about it from last, I'm not sure, 1.5 year, because people are like used to कि हाँ ठीक है गाजा में तो होता ही रहता है. नहीं, like, there are 70,000 people who died since this new Israel Palestine war, and one third of them were children. So it's a kind of genocide, but ठीक है, nobody is interested. So सबसे पहले quick commerce platform to stop the 10-minute delivery services. Yes. So Swiggy हो, Zepto हो, Blinkit हो, और भी कुछ है क्या? टेढ़े मेढ़े जो हैं. So they promises that like grocery on your doorstep at 10 minutes. Harish Pandya, that's the problem. In, like people are having very small memory. If they are having good memories, they also being like there can be people can be protected against these kind of event. So हाँ है, छोटी याददाश्त है बच्चों की, छोड़ो. यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है, they are saying that whatever you are making as a headline, right? For example, 10-minute delivery promises. This is something जो कि एक marketing material नहीं हो सकता. So according to Labour Ministry, the commerce platform in India led by Blinkit, they should begin removing the 10-minute delivery promises from their branding and marketing material. Right? This move was like kind of direct intervention from the Labour Ministry. फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट की बात करें तो वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है. ब्लिंकिट ने लिखा है कि दे हैव ऑफिशियली अपडेटेड देयर टैगलाइन फ्रॉम 10,000 प्लस प्रोडक्ट डिलीवरी इन 10 मिनट्स, 30,000 प्लस प्रोडक्ट डिलीवरी एट योर डोर स्टेप. उन्होंने वो टाइम वाला जो मैटर है, राइट, वो हटाया है. And this is a good step because gig worker might have, come on, delivering something fast, right? This can be a good thing. But delivering something on like within 10 minutes during the extreme traffic hour, violating the traffic rules, rush driving, accidents, and other things, that is not something which is supposed to be. So other platforms like Zepto, Swiggy, Instamart, and Zomato, these platforms were also part of discussion and with the ministry, and they expected to follow the this particular process by removing the advertisement from these apps. Now, what are the reason? Major reasons अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेबर मिनिस्ट्री जो है which is under the Mr. Mansukh Mandavia, they met with the platform representative like last day, 13th of January, and they argued that they should stop branding the what we can say extreme speed over work safety. सेकेंड थिंग गिग वर्कर प्रोटेस्ट, अभी रिसेंटली स्टार्टिंग में दिसंबर 31st to 1st जनवरी को जो गिग वर्कर प्रोटेस्ट थी, उसके कारण लोगों को गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम पता चली. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज सेफ्टी कंसर्न. यस, इफ दे आर डोंट हैव अ प्रॉपर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, दिस इज अगेंस्ट द लेबर लॉ, राइट? अब बात करते हैं जो इम्पैक्ट, क्या कहना है,
it will be good thing if 10-minute delivery service stops because these gig workers are exploited on in one way. This is exploitation. Yes, I agree. I completely agree with this. I mean, if I promises someone that I should reach there by 9:30, right? So I gave the 9:30 time because I can reach there by 9:50. भाई कभी कोई नेताजी आ गए, कभी कोई वीआईपी मूवमेंट हो गया, कभी ट्रैफिक ज्यादा है, and Kabhi, there are like some particular instant because of which I can get delayed by 5-10 minutes. I don't want to do that. But if somebody is promising to be there, it's a pressure. So yes, that's something. Now, what exactly was the problem? Branding versus reality. Yes, जो branding versus reality थे ना, उसका problem चल रहा था. When companies are removing those 10-minute branding, the actual speed may not change drastically. In dense urban areas where dark stores are located close to the people. That is the concern that is still arising. So the problem is if even the 10-minute tax is being removed, for example, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास कोई dark store होगा from where they can collect the grocery and can deliver. Even though at that time the pressure of a 10-minute delivery might be there. So they want, the labor ministry want that people and the gig workers should not have that pressure, and the company will still be like, by let's deliver this faster than other application, and because of this competitiveness, that can be one of the problem. Then platforms also are moving towards showing the dynamic, realistic delivery estimation. That's what they promised in the discussion. Uh, they said they are going to consider different particular criterias to tell that realistic time. For example, traffic, right, distance क्या है, riders कितने available हैं, right, and riders की पुरानी जो particular delivery timing है according to that data as well. So it's going to be have some realistic approach according to the platforms, not the 10-minute but more realistic. So let's hope for the best कि चीजें जो है वो बेहतर हो, राइट. चलो. But think like this: the gig workers are rushing through the traffic to deliver, and companies don't pay them well. Hey, the work on creating some job, work on creating some job. That is something that I want to say. Yes, gig workers. Like, specifically, we cannot call it a permanent job because they don't have offer letter, right? So yes, the focus should be on permanent job from the government of India side. But there is one particular benefit from the gig worker economy. If somebody wants to have some extra income apart from the regular job, that can help. That can be helpful in the gig worker economy. तो वहां से है, right? So that's completely fine. Let's move to the next one. The XC splits on the sanction to prosecute public servant. The Supreme Court of India Tuesday delivered a split verdict on a legality of a provision in anti-corruption law which mandates prior sanction before prosecuting the public services. जो हमने बात की थी कि दो जजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं कि 17A, सेक्शन 17A जो है दैट इज व्हाट वी कैन से वैलिडेट करता है या नहीं करता है. सो इफ समबडी इज देयर जो कि कॉमन सिटीजन है, नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, तो उनको डायरेक्टली जो है प्रोसिक्यूशन में लेके जा सकते हैं. बट इफ देयर इज अ पब्लिक सर्वेंट देन देयर आर डिफरेंट केसेस. तो एक साइड का कहना है कि नहीं भाई सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, दैट इज जस्टिस बीबी नागरत्ना का कहना. अनदर जो है जो जस्टिस विश्वनाथन है, ही इज लाइक कि नो, इफ लोकपाल लोकायुक्त इज समथिंग इज देयर, देन देयर आर केसेस जिसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो हम उसको उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है. दिस वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है. देन भैया मुंबई एंड अदर पर्टिकुलर स्टेट्स जो हैं वो चल ही रहे हैं, जो लोकल इलेक्शंस हैं. Yes, Mumbai set for high stakes battle as a campaigning for the 29 civic body elections and where
जो फडणवीस साहब हैं उनका अपना वो है कि महायुति जीतेगी। एंड देन अनदर न्यूज़ या कि भैया 14 shifted out of ICU due to water leakage in SMS हॉस्पिटल सवाई मानसिंह वाले हॉस्पिटल में जो भी वाटर लीकेज के कारण हुए थे वो थोड़ा सा शिफ्ट हुए बाहर आईसीयू से। देन after 6 hours of questioning on Karur Stampede case, CBI issues summon to विजय अगेन कि हम फिर से बात करेंगे। यस, विजय थालापति का जो लास्ट ईयर का वो था, जो करूर में स्टैम्पेड हुआ था बिकॉज ऑफ हिज रैली, उसके लिए कल क्वेश्चन किया गया था, समन अगेन नाउ व्हाट वी कैन से। अच्छा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस, दैट इज अनदर न्यूज जो हमें जानना चाहिए। उत्तराखंड सीक्स इंडियन एयरफोर्स to help us against the forest fire. It is in the Valley of Flower in the fifth day. So this particular valley, let's discuss what it is. This is Nanda Devi Valley. जिसे Valley of Flowers भी बुलाया जाता है, right? It is a UNESCO World Heritage Site and in the natural category. And also, Nanda Devi Peak is the highest peak of India, completely lying within India. So it has like some very unique features, the flowers, the flora, fauna, that all are exceptional. So what exactly is happening? Continuously, there is a small fire that is rising, and it is going like what we can say aggressively forwarding. So Uttarakhand government asked the disaster management to contact the Indian Air Force for the help. Yes, वहाँ पे if you'll see, right, it is located on approximate 3,300 meter above sea level, and it is having like approximate thousands different species of flora and fauna, in which the like 600 are about the variety of flowers, and it's very beautiful. I have been there, and वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देर आर लाइक एक्सेस रूट जो है वो बहुत लिमिटेड है. So even if we are like disaster management forces and there is a flower rising in that particular valley and we want to like shut that flower, it's going to be critical. क्योंकि मैं वहां तक गया हूँ तो I know कि it's a problematic thing. So that is why Uttarakhand government seeks help from the Indian Air Force कि भैया हमारी help करो. And every time the country is in problem, right? They call for military, right? Hmm. So ये एक particular वो था. Moving on. Okay. हाँ. Jammu Kashmir groups expresses concern over the police profiling of the mosque. Yes. Let's discuss what is the meaning of police profile. है ना? अभी recently what is exactly happening in Jammu Kashmir, that police initiated large scale profiling and data collection. So सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जिससे तुम्हारा काम profiling and data collection, and especially they are targeting the mosques, the madarsa, right, and the staff they are in which like working on those particular places. And why उसके पीछे का रीजन अभी हम डिस्कस करते हैं. So first thing first, what are the details of this exercise? So सबसे पहले पुलिस distributed a detailed multi page performer to the village, right, for the different village to generate the information. Then the institutional data जो कि मदरसा है, मॉस्क है, जिसमें नाम है, ideological affiliation है, whether that is Devbandi, whether that is Hanafi or something. The geo coordinate, there is structural specification that what are the infrastructure they are using, their seating capacity, how many can sit and how many are there. Then their financial records, yes, what was the construction cost? What was your source of funding for the daily expenses? Bank account numbers, bank detail, and then staff's personal information.
यस, कि इमाम्स हों या मसनीस हों या मैनेजमेंट कमिटीज हों, इन सब के आधार कार्ड, पासपोर्ट डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, मंथली इनकम, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड सोशल मीडिया like profiles. The last one, the technical surveillance. They have requested mobile phone model and IMEI number. These are the details which is being done by the Jammu Kashmir police recently for the profiling of mosque, madrasas, their committee, their members, their particular everything. So not only this, think about it. Geological coordinates, right? Structural specification, infrastructure specification, cost, right? Funding, bank account number, personal details, Aadhaar card, passport, travel history, IMEI number, phone का model, whether you are using Nokia का ईंट फेंक के मारो phone or iPhone 17 Pro Max, right? So a lot of things are there. अब क्यों ये ड्राइव की जा रही है अगर वो बात करें तो सबसे पहले अथॉरिटीज की बात करते हैं. According to the authorities, they did, indicate the this is the drive follows the busting of a white collar terrorism, right? Yeah, white collar terror module. In the late 2025 investigation into the module reportedly revealed the involvement of radicalized professionals and individuals linked to religious institution and in support. The interstate terror network, right? The BJP spokesperson defended the move by other criticized it. तो सबसे पहले बात करते हैं दक्ष. हम नाम नहीं लेते किसी भी पार्टी का, है ना? ठीक है. एंड मत किया करो ये सारी चीजें. हाँ, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो. लेट्स डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है. सो व्हाट रिसेंटली हैपेंड, अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली एनसीआर में there are some particular terror network which was busted. Okay. And the people who actually allegedly involved in this particular terror network, they were well educated doctors, and some of them were well educated people, including doctors. So people started calling it the white collar terror module. तुमने नाम ले लिया साहिल, चुप हो जा. So they call it white collar terror module. Now, what exactly is, अगर मैं थोड़ा सा न्यूज चैनल्स की बात करूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम. देयर इज दिस एंकर हु सेड पहले टेररिस्ट खूंखार होते थे, उनकी शक्ल डरावनी होती थी, एंड नाउ वो स्टेथ और वाइट एप्रन पहन के टेरर फैला रहे हैं. यू हैव सीन ना दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था, जो फरीदाबाद वाले एरिया में वो पकड़ा गया था, chemical, explosive chemical. So they all are being linked, and people started calling it the white collar terror module. तो जो अथॉरिटीज उनका कहना है कि हम इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और बाकी सारी चीजें एसोसिएटेड है, वी वांट टू बस्ट देम. दैट इज व्हाई दिस ड्राइव इज गोइंग ऑन नाउ. अब इसका क्रिटिसिज्म क्या कहता है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं. जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फिगर्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मस्जिद उल्लेमा की, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मैं अभी जो नोट्स है मैं उसमें बता रहा हूँ. डिस्क्राइबिंग द प्रोफाइलिंग एज इंट्रूसिव एंड अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू privacy एंड रिलीजियस फ्रीडम. यस, उनका ये कहना है कि एनी वन, लाइक यू हैव इंटेलिजेंस एंड यू शुड कलेक्ट द डेटा, right? But this particular exercise is intrusive, and this is the violation of right to privacy and right to free religious freedom, freedom of religion. Because this is going on the mosque and madrasa only. News anchor even fight on who gave the name tag OG. तुम फिर आ गए. मजाक उड़ाएंगे अपन, बाद में मजाक उड़ाएंगे, राइट?
यस, अभी पूछता है क्लैट जो उस पर डिस्कशन करते हैं. Let's come to the point, right? Then political leaders, for example, National Conference and जो PDP है, People's Democratic Party, they call it the punitive overstretch, and collective punishment depends upon the mistrust within the states and Muslim community. श्रीनगर के एमपी जो हैं वो भी उसे स्ट्रैगलिंग ओवरीज बता रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट, लाइक उनका ये कहना है कि पीपल जस्ट वांट control the religious, what we can say, institution and religious life of the people. Authorities जो है वो ये करना चाहती हैं, right? तो that is not right. हाँ. फाइनल आउटकम की अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके का है, कल मैंने इस पे एक डिस्कशन सुना था. So when it comes to religious freedom, everybody in India has freedom to practice their faith and religion. राइट. सेकेंडरी, अगर हम रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की बात करें, विच वी कॉल इट द वाइट कॉलर टेरर, देन इट्स अनडाउटली अ न्यू प्रॉब्लम, एंड वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बेस्ड ऑन योर डेटा. बट कलेक्टिंग द ट्रैवल हिस्ट्री, कलेक्टिंग द फाइनेंशियल सोर्सेज, IMA नंबर मॉडल, बाकी सारी चीजें, सो दिस माइट बी the like violation of right to privacy. If we challenge it into the Supreme Court, they might like stop it. ओके. अरे इन दो, मेरा मॉर्निंग सेशन कोई नहीं बंद कराएगा. चलो बात करते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. Remember that Kerala particular issue where an MLA was uh, like charged with the different rape cases under Me Too. So they granted the crime branch for 3 days police custody. जो वो थे MLA थे, तो उनका थोड़ा सा मिस्टर राहुल कुटली, ऐसा कुछ नाम था उनका. नाउ रिस्पॉन्ड टू पिटिशन ऑफ धर्मशाला डेथ. तुम लोग चालू हो गए. फोकस गाइस, फोकस. राइट. चलो. सो थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या है, है ना. पहले, सबसे पहले धर्मस्थला की हम बात करते क्या है. सो इन जुलाई 2025, मैंने पूरा वो लिखा हुआ है टाइमलाइन, सो लेट्स डिस्कस. और अभी तुम्हारे जो गेट में मेरी न्यूज आ रही है, पहले वो न्यूज सुनो. So in July 2025, a 40-year-old temple sanitation worker, जो धर्मस्थला टेम्पल है वहां की बात हो रही है, राइट. Identified as Chennaiya, he alleged that he was forced into burying or burning hundreds of bodies between 1995 to 2015. Yes. In 20 years, he's been forced to bury hundreds and burn hundreds of bodies. And he claimed many victims were women and minor who showed sign of sexual violence and strangulation, and that is not under the authorities. It was directly from the people की आवाज को होगा. Now, एक SIT इस allegation के बाद, she said there are some certain political figures whose pressure was there, and then this particular things started, right? Hmm. So excavation हुआ, right? Excavation में approximate 17 sites जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया by the whistleblower, that is Chennaiya, right? जिसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें मिली, एंड दे हैव मार्क्ड इट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके. तो जो साइट 6 थी, वहां पे दे हैव पार्शियल स्केलेटन, दैट इज 14 15 बोन्स, मेजरली ऑन अ मेल. जो 14 थी, उसमें 81 to 114 bones and skulls were found. They were supposedly like for male, and while red sari was also found near the potential suicide case का जो होता. Then there are other sites जहाँ पे ये particular excavation चल रहा है. Now, what exactly has happened? Uh, most of the sites, including the alleged mass graves,
They are having 60 to 100 bodies, yet they don't have many remains, but they have some remains. Now, whistleblower जो है उसे arrest किया गया on August 2025. The SIT arrested Chinaya for perjury officially alleged that he lied about the origin of the remains he submitted in the court. With forensic tests revealed that were male, despite he claimed that the body belonged to females and victim. Now, what exactly is the problem? जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है जो कर्नाटक हाई कोर्ट है दे वर लाइक कि एसआईटी रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द पिटिशन सीक्स सेपरेट एफआईआर ऑन द अननेचुरल डेथ ऑफ 74 पर्सन recorded in Dharmasthala between 1990 to 2021. Those bodies were buried within the 24 hours without following the legal procedure. एंड जो एसआईटी प्रोब है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि हम अपना पर्टिकुलर काम कंटिन्यू रखेंगे यस प्रॉब्लम जो है उसमें आते हैं सो देयर आर सर्टेन अनरिजॉल्व्ड केसेस जिसका डिस्कशन किया गया मैं उन केसेस की बात करता हूँ सबसे पहले सौजन्या केस in 2012 a 17-year-old student who was raped and murdered despite of CBI's involvement the prime suspect was acquitted in 2023 due to lack of evidence leading the renewed demand for the fresh probe Ananya Bhatt case Padmalata cases these are the people these are the girls who actually vanished right so ये चीजें हैं यस नाउ टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का रिस्पांस और पुलिस कंट्रोवर्सी ये तीनों चीजें यहाँ पे चल रही हैं सो एक एक करके बात करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेंपल दिस इज द एलिगेशन इज बेसलेस एंड फॉल्स and it is a part of organized campaign to tarnish the temple reputation government response the Karnataka government formed an SIT led by DGP in July so that the public should understand कि हम काम कर रहे हैं पुलिस जो है उसका ये कहना है कि पुलिस admitted that they to having deleted a 15-year worth of record regarding the unidentified death body from 2000 to 2015, fueling the cover-up allegation. So पुलिस ने ये माना है कि हमने कुछ रिकॉर्ड्स जो है हटाए हैं जहाँ पे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी तो ये अगेन एक प्रॉब्लम में है दैट इज व्हाट धर्मस्थला केस क्या कह रहे हो तुम लोग तमिलनाडु कैसे ये आदमी मरवाएगा sounds like a horror Netflix opening. Yes, Rishmana, this is if this is true, then this is going to be like a very critical crime. Remember that, अरे अभी recently किसको release कर दिया था with the lack of evidence? Nithari, right? Remember Nithari case? Yes. So this can be another particular thing if turns out to be true. But still, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक ये स्पेकुलेशंस में ही रहेगा बट इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक इफ इट इज ट्रू नाउ देयर आर टू थिंग्स जो डिस्कस करने के लिए है मणिपुर का डिस्कशन अपन कर चुके हैं सो हम नहीं करेंगे फाइनली जो कुकीज ग्रुप है दे लाइक एग्रीड टू बी ज्वाइन द मणिपुर गवर्नमेंट with certain conditions. So उस पर भी discussion चल रहा है. Let's hope for the best. Soon we see a peaceful Manipur. Rishpanna, chalo, this is your homework. Read about the Nithari case. Okay. It's a very critical case, बच्चे. तुम अभी lawyer बनने वाले हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या-क्या हो सकता है इस देश में. Now, trust building with China is on, but LAC vigilance is essential, says the army chief. यस हमने अभी बात की थी कि जो सक्शम वैली है वहां पे जो चाइना का क्लेम है राइट दैट इज इलीगल सो जनरल द्विवेदी इंटरेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज हैव जनरेटेड सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेंस टू कीप द बॉर्डर काम the long standing position on Saksham Valley he says now New Delhi is considered the 1963 agreement between India Pakistan and China as illegal so ये अब एक नया लफड़ा जो है वो आ रहा है ना and soon there is going to be controversy. Let's go for the politics one. So China's Communist Party's representative they met the RSS leaders in the RSS headquarters itself, right? And
द सेम टाइम दे सेड कि सक्सेस वैल्यू उनकी। यस, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, है ना, चाइना इज दैट काइंड ऑफ फ्रेंड, है ना, जिसपे आप भरोसा करते हो, आप भरोसा करना शुरू करते हो। एंड चाइनाज रिस्पॉन्स इज वन सिंपल थिंग, तू भरोसा करके देखना भाई, मैं तोड़ेगा। राइट। यस। हाँ। सो जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि एक साइड वो आके हमसे मिल रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग दैट थिंग्स आर गोइंग बेटर एंड बेटर, but suddenly some particular chamgadad eating folk will come out and they will be like, no, 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 we are not going to have peace. Okay, so yes, that is China for us. Recently, ये चीज हुई है and we are going to have some particular details soon. हाँ, प्रॉब्लम ये है कि there was an agreement between Pakistan and China which we don't agree with, and उसकी बेसिस पे ही कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। रहने दो। चाइना एंड फ्रेंड डोंट सिट इन द सेम सेंटेंस। वो भी है, खैर ठीक है। देन ममता बनर्जी ने अगेन एलिचली उनको वो किया कि बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन आर सीकिंग मोर वोटर डिलीशन इन द स्टेट, राइट। एंड देन अमित शाह ने अपना वो स्टेटमेंट रखा कि सोमनाथ टेम्पल इज अ सिंबल ऑफ नेशन enduring ड्यूरिंग द फेथ एंड ट्रेडिशन, बिकॉज देयर आर 1,000 years जो कंप्लीट हुए हैं फर्स्ट अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। Again, Communist Party of China delegation calls on a senior RSS leader in New Delhi. And there is nothing wrong in that. Yes. अबे ये flag ही नहीं है. The thing is, problem is this, that if the delegations are meeting for certain reason, that doesn't mean it is a kind of anti-national thing. I mean, this is just the narrative. 2017 में Chinese delegations के साथ राहुल गांधी मिले थे, who is our leader of opposition, right? तो वो तब से लेके बवाल है, एंड नाउ दे आर मीटिंग आरएसएस, तब भी बवाल है। सो इट्स नॉट अबाउट आर पार्टी, आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और व्हाट वी कैन से लाइक आर आइडियोलॉजी और आर डेमोक्रेसी, आर गवर्नमेंट मीटिंग चाइना, इट्स अबाउट द चाइना स्टाइल। मैंने बोला ना, तू भरोसा तो करके देख, मैं तोड़ेगा वाला केस है। ठीक है। कांग्रेस लॉन्चेस कैंपेन टू मोबिलाइज मनरेगा वर्कर्स सून, राइट टू वर्क वाला सीन पे, एंड heavy composition on dog bite. We have discussed this. We are not going to have more discussion. The two suspect on Nipah infection is West Bengal. कल हमने बात की थी, सेंट्रल जो है वो अपना काम कर रही है। एडिटोरियल जरूर पढ़ना, है ना, स्पेशली ईरानियन जो पर्टिकुलर इशू है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एआई और इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उनके ऊपर जो लिखा गया है। ओके, सी, let's not discuss politics, let's discuss news, guys. चलो, एंड देन जो वो है, क्या कहते हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ, राइट, केरला लोकल बॉडी इलेक्शंस, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो अच्छा पढ़ने के लिए है। फॉरेन न्यूज में चलते हैं। फॉरेन न्यूज में Trump's latest tariff threat to on Iran to have little impact on India. India trade with Iran declined significantly from 2019 following the US sanction against the country, while overall trade level have been small. So अगर ट्रम्प थोड़ा बहुत टैरिफ बढ़ाता भी है तो इंडिया को बहुत कम वो होने वाला है, इम्पैक्ट होने वाला है। So what exactly is happening in India, Iran? So when Iran started having like strong क्या कहना चाहिए, a response and strong resistance. Then finally, the Trump says कि people should actually take over the institution. Israel came into the picture. Can you imagine? Israeli ministers and Israeli leaders are tweeting in Farsi language just to make sure कि ईरान में एक unrest बना रहे. So yes, यहाँ ये once a wise man said in our country.
that hypocrisy की भी सीमा होती है, and Israel and America are the limit of hypocrisy. Right. Moving on to the business news, to the foreign news. म्यांमार का जनता पार्टी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन जीत रही है. What we can say? Yes, UN demand independent probe on women killing in ICE official. बच्चे लोग, there is a force called ICE in USA, right, who is killing their own citizen based on suspicion. So yes, the way things are getting, है ना, इसका फुल फॉर्म है इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, दैट इज आइस. एंड the way things are getting at different places, right? It's अभी कल मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि somewhere USA is getting a situation like civil war. Yes, because this particular ICE force, है ना, it is somehow getting into those people's life जो उन्हें नहीं करना चाहिए. So they are arresting, almost like जो particular data है, it is saying approximately 75,000 to 1 lakh people are being arrested by the ICE force, and they are the people जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है. And the best part is, worst part is, we have our police authorities, we have our military authorities, special forces. They all show their faces except for commandos who actually are for the special work. But these people, they can do anything in public, but like they don't show their faces. So in America itself, they are seeing huge resistance. People are marching, people are protesting on road against the doing of ICE. Yes, the thing is that this ICE force officially sorry, fatally shot a woman 3 times, right, on her face, because according to them she was not cooperating. So yes, things are bad in America. कल हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे because I'm pretty much sure कल तक कुछ बड़ा वो होने वाला है. लो भैया, Trump cancel the talks with Iranian official, ask protesters to take over the institution. जब हमसे नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा आग लगाएंगे. That is what Trump is doing. चलो, moving on to the next one. China is a threat to Greenland, Trump argues, but analysts claim otherwise. See, Trump कह रहा है China is a threat to Greenland. इससे ज्यादा मैं अब डिस्कस नहीं करना चाहता. Yes, technically Greenland is world's eighth largest reserve for the rare mineral, and ये दोनों पार्टी जो है, राइट, ये दोनों उस जगह पे अपना अपना क्लेम चाहते हैं. Now China doesn't claim in such a fashion. China is claiming the Greenland area for the polar Silk Road. Yes. So China is under one particular heavy project जिससे ये BRO, Border Road Organization, क्या कर रहा हूँ मैं, Border Road Organization में पहुंच गया. BRO, Belt and Road in BRI, sorry, Belt and Road Initiative, जो कि जो एंशंट स्टैब्लिश्ड सिल्क रूट था उसको नए तरीके से स्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो वो चाहते हैं कि दे शुड रीच द इन्वेस्टमेंट टू द आइसलैंड, नॉर्वे इन प्लान्स टू डेवलप नॉर्दर्न सी रूट विथ रशिया. एंड दिस इज समथिंग जिससे एक ट्रेड रूट डेवलप होगा जिससे ट्रेड आसान हो. सो यूएस वाज लाइक चाइना इज थ्रेट टू ग्रीनलैंड, सो गिव इट टू अस. We will do better with China the way we did with Iraq, we did with Syria, Libya, Afghanistan, Venezuela. Let's not discuss more. ठीक है, स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था. Let's have some question answer for today. हाँ, the Kohli 2.0, free flowing and still a run machine. भाई अनडाउटली यार, ये आदमी है, इस आदमी के पास है वो स्ट्रेंथ. ठीक है. So let's discuss the questions from this. Ready, guys? मैं भी थोड़ा पानी पी लूं यार, 1 घंटे हो गए.
दक्ष लाइक अगेन नाम नहीं लेते, आइस आर डिफरेंट थिंग, है ना, उसका मोटिव अलग है, बट ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। रेडी? इज इट विजिबल प्रॉपरली? मेरे को भी तो देखने दो, इज इट विजिबल और नॉट। आई थिंक इट्स प्रॉपरली विजिबल। चलो let's start with the first question. The Supreme Court questioned the Election Commission regarding the deletion of a voter's name under the constitutional provision that guarantees right to vote to adult citizen. So वो कौन सा constitutional provision है जो right to vote provide करता है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेश्चन किया जा रहा है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर आर्टिकल 19, 21, 326, 368। बताओ। कम ऑन गाइस। इतना मुश्किल था क्या ये? रिस्पन्ना आर्टिकल 19? नो। साहिल सी कहना है, साहिल का, एंड दक्ष कहना है बी। द करेक्ट आंसर शुड बी सी। यस, आर्टिकल 326 इज समथिंग जो कि ये गारंटी देता है, राइट, कि वोटिंग इज अ लीगल राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्ड ओवर द वोटर डिलीशन arises due to SIR exercise removing approximately how many names from the electoral roll। तो उनका पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिलीशन जो है उसको क्वेश्चन क्यों किया है, कितने नाम इलेक्टोरल रोल से SIR के दौरान हटाए गए? 2.5, 4, 5, 6.5 करोड़। इजी है ये तो। We had discussed this recently. Very good, guys. There are 6.5 crore names which are being deleted from the electoral rolls, और ये रीजन है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पे थोड़ा सा सीरियस हो गई है। ठीक है। The section 17A discussed in the Supreme Court split verdict belong to which statute? सो उनका कहना है कि जो सेक्शन 17A है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ था विद स्प्लिट वर्डिक्ट, ये किस पर्टिकुलर लॉ का पार्ट है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, या भारतीय न्याय संहिता 2023? बताओ। ओके, दक्ष का कहना है सी। वेरी गुड। और साहिल का कहना है ए, इंडियन पीनल कोड। हम्म। इट्स पन्ना कहना है सी। द करेक्ट आंसर इज सी। यस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 17 लाइक 1988, उसका सेक्शन 17A जो है वो डिस्कस किया गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। जस्टिस बीवी नागरत्ना held the section 17A unconstitutional primarily for violating which constitutional article? जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 किस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है? किस पर्टिकुलर आर्टिकल का वॉल्यूशन माना है? ऑप्शन आर आर्टिकल 19, 21, 14 और 32। बताओ। ओके, दक्ष, ऋषपर्णा। यस, द करेक्ट आंसर इज सी। कम ऑन, हमने बात भी की है कि राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही थी, तो वो जरूरी है कि भाई वो मेंटेन रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which authority did Justice K.V. Viswanathan suggested should independently grant sanction for persecuting the public servant? सो जस्टिस के पी विश्वनाथन ने किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को
सेंक्शन ग्रांट किया है कि जो इंडिपेंडेंटली पब्लिक सर्वेंट्स को क्या कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके। ऑप्शंस आर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल लोक आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर या कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बताओ। साहिल का कहना है बी, दक्ष का कहना है बी। वेरी गुड, उन्होंने लोकपाल लोक आयुक्त को बोला है, वेरी करेक्ट। चले। The army chief emphasized vigilance along the international boundary between India and China. So, what is the name of international boundary between India and China? Line of control, McMahon line, line of actual control या टूरेंट लाइन। सो किस लाइन पे विजिलेंट होने की बात करी है? बताओ। वाह। ओके, द करेक्ट आंसर है सी। अभी एक्चुअल कंट्रोल का ही बात चल रहा था। So India considered the 1963 agreement between Pakistan and China regarding which territory is illegal. India किस particular 1963 agreement जो पाकिस्तान चाइना के बीच में हुआ था, किस टेरिटरी को वो इलीगल वो करती है, कि एग्रीमेंट को इलीगल करती है? अक्साई चिन, डोकलाम, सक्सकम वैली, गिलगित बाल्टिस्तान। बताओ। यस, करेक्ट, दैट इज सक्सकम वैली। नाउ लेट्स गो फॉर समथिंग जो हमने डिस्कस नहीं किया था। Which rocket system is tested by the Indian Army currently has a range of 120 kilometer with plans of extension? अभी रिसेंटली किस रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया गया है इंडियन आर्मी के थ्रू, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है एंड दे आर प्लानिंग टू हैव एक्सटेंशन? ऑप्शंस आर पिल्लय, अग्नि 5, पिनाक और ब्रह्मोस। ओके, सी आई गेस। अदर्स, बाकी लोग क्या कह रहे हैं इस पे? So the correct answer should be Pinak. Yes, recently tested. The range is 120 kilometer, and they are planning to have extension as well. Okay, okay. Why did quick commerce platform decided to remove 10-minute delivery promises? क्यों रिमूव किया भैया? कंज्यूमर कंप्लेन, competition law violation, government intervention citing the worker safety or logistic efficiency? बताओ जल्दी। वेरी करेक्ट। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, हमारी बात भी हुई कि मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद डिस्कशन हुआ है। गुड गाइस। चलो, सुन तो रहे थे कम से कम तुम लोग। मेरे को तो लगा सुन भी नहीं रहे हो। चलो। द सेंटर फॉर्म एन इंटर डिपार्टमेंटल पैनल टू एड्रेस which emerging crime effectively for the elderly citizen. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटर डिपार्टमेंट पैनल जो है उसको फॉर्म किया है कौन से ऐसे क्राइम के लिए जो बढ़ रहा है फॉर द एल्डरली सिटीजन्स? ऑप्शंस आर साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन डिफेमेशन और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि बढ़ क्या रहा है। साइबर स्टॉकिंग, अरे एल्डरली सिटीजन की बात हो रही है साहिल। थोड़ा लॉजिक, थोड़ा लॉजिक। एल्डरली सिटीजन्स के पास क्या होता है, क्या करके अपन निकालते हैं? डिजिटल अरेस्ट। यस, कि भैया मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, ईडी से बोल रहा हूँ, राइट, एंड आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, आपका आधार कार्ड यहाँ मिला है, ये वो। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। मेरे को बोला गया कि आपका मोबाइल नंबर, लाइक आई गॉट अ कॉल, लाइक आपका मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड जो है वो एक कौन सा पीएमएलए और वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले उसमें पाया गया है।
तो आपको अरेस्ट करने का वारंट निकला हुआ है, मैंने कहा आ जाओ मेरे घर आ जाओ, राइट, बैठ के चाय पिलाऊंगा। सो पीपल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस गेट इनटू दिस थिंग, है ना। यू हैव टू मेक श्योर कि nobody is going to call you for arrest. They will come to your doorstep with a warrant, proper warrant, because you are citizen of India, and then they will arrest you. But ठीक है, पब्लिक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी अवेयरनेस फैले। Haryana government directed officials to avoid using the terms in reference to scheduled caste and scheduled tribes. So कौन से वो टर्म है जिनको इन्होंने वो करने को, अवॉइड करने को बोला है? The options are दलित and आदिवासीज, backward and tribal, हरिजन and गिरिजन, और SC ST। बताओ। हम्म। हरिजन एंड गिरिजन, यस। द थिंग इज, गिरी का मतलब पर्वत होता है, हरि का मतलब होता है ईश्वर। सो वो हरिजन एंड गिरिजन टर्म जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स को बोला है कि इसको यूज करना बंद करें, राइट, अवॉइड करें। द वैल्यू ऑफ फ्लावर अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट पावर इज रिकॉग्नाइज्ड एज, वैल्यू ऑफ फ्लावर जो फॉरेस्ट फायर से, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं साहिल। यस, दलित आदिवासी इनका कुछ अलग मतलब निकल सकता है, बैकवर्ड एंड ट्राइबल्स इनका अलग मतलब निकल सकता है, राइट। यस। सो दलित वो हैं जिन्हें कभी सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली अपनी कंट्री में। आदिवासीज वो हैं जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के सबसे लाइक पहले वो हैं रहने वाले, जिनको आप ये कह सकते हो कि ये एंशंट आदि आदि काल स्टार्टिंग से रहने वाले। बैकवर्ड्स आर दोज जहाँ हमें सोशल अपॉर्चुनिटी तो मिली बट पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ट्राइबल्स आर दोज जो स्पेसिफिक ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। हरिजन अनटचेबल्स को गांधी जी ने बुलाया था। गिरिजन ऐसे लोग हैं जिनका मेन इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो पर्वतों से चलता है, जंगलों से। एंड ST and SC आर ऑफिशियल टर्म्स described under the Constitution of India. Right? They all have, they might have a similar meaning in different contexts, but they are not same. ठीक है? So 12th, value of flowers क्या है? हाँ, almost like thing. वैल्यू ऑफ फ्लावर्स क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यस और नो? दक्ष क्वेश्चन पूछ के दूसरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता रहा है। दक्ष, फोकस। चलो, let's move to the next one. Which constitutional right was cited by the Jammu Kashmir religious groups opposing the police data collecting on the mosque? किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात की है जम्मू कश्मीर के रिलीजियस ग्रुप्स ने पुलिस का जो डेटा कलेक्शन है मॉस्क का उसको अपोज करने के लिए? ऑप्शंस आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। बताओ। कम ऑन। आई गेस दिस इज एन इजी वन। हमने बात भी की थी कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा, राइट। चले, लास्ट टू क्वेश्चन फॉर टुडे। The Karnataka CM criticized the central replacing the Manrega with which new legislation? So जो कर्नाटका के CM है उन्होंने सेंटर को क्रिटिसाइज किया है फॉर रिप्लेसिंग मनरेगा फॉर विच न्यू लॉ, राइट। ऑप्शंस आर रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2024, VB जी एक्ट 2025, नेशनल लेबर रिफॉर्म एक्ट, या ग्राम विकास योजना। इट्स इजी। VB जी मनरेगा इज रिप्लेस्ड बाय विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी एक्ट, राइट। यस। सो वो बीवी राम जी जो है, देयर इज नथिंग लाइक प्रोवोकिंग द
Chalo. Last, the Supreme Court ordered CBI probe into which incident, citing that it had shaken the national conscience. यस, सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए सीबीआई प्रोब जो है उसको ऑर्डर किया है, ये कहते हुए कि ये इट हैज शेकन द नेशनल कॉन्शियस. सो दैट इज गदर पेस्ट्री डिस्कवरी, करूर स्टैम्पीड, सबरीमाला घी स्कैम या धर्मस्थला डेथ. बताओ. वेरी गुड रिच पंडा. आई एम प्राउड ऑफ रिच पंडा. यस, बेटा फोकस बना है उसका. बाकी पब्लिक जो है वो लगी हुई है लड़ाई झगड़े में. चलो. So this was it from my side for today. आज काफी लंबा चल गया यार. आई गेस 1.5 घंटे के आसपास हमने बातें की. 1.5 hour. So this is it from my side for today. And make sure to read the newspaper properly. Make sure to make notes properly. And this is it for today. I'll see you tomorrow. And till then, life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, एंड मेक श्योर कि पढ़ाई करते रहना है ना, किसी और उसमें नहीं पढ़ना है. ठीक है. सो गुड डे गाइस. सी या. चलो. आई विल सी यू.